Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. Today I am going to discuss the process of gamete formation, spermatogenesis. But before that, one hadith. I have selected one hadith Qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? क़ाल अल्लाह ताला, कि अल्लाह ने फरमाया है कि अनफिक यब्ना आदमा उनफिक अलैका। पहले तो हदीस कुदसी क्या होती है कि होता अल्लाह का फरमान है लेकिन कुरान में नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने यूँ फरमाया है, वो कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये है कलाम अल्लाह का है। जैसे यहाँ पे मैंने पूरी हदीस लिखी है कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि काल अल्लाह ताला, अल्लाह ने क्या कहा है? अनफिक यब्ना आदमा उनफिक अलैका। कि अब तर्जुमा देख लें, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस आई है, दोनों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया है, क्या फरमाया है? ए इब्ने आदम, तू अनफिक, तू अपना माल खर्च कर। अब किस पर खर्च करेगा? मेरे बंदों पर, यानी अल्लाह के बंदों पर खर्च कर। उनफिक अलैका, मैं अपने ख़जाने से तुझ पे खर्च करूँगा, तुझको देता रहूँगा। तो जितना अल्लाह के बंदों के लिए हम खर्च करेंगे, अल्लाह पाक उतना ही देते रहेंगे। ये अल्लाह पाक का खुद फरमान है, हदीस कुदसी है कि तुम मेरे बंदों पर खर्च करो, मैं तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करता चला जाऊँगा। तो कभी भी अल्लाह के बंदों पे अपने माल में से खर्च करने में कभी भी कमी नहीं आती, वो हमेशा बढ़ता ही है। अल्लाह पाक देता रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान और अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we are going to talk about the formation of male gamete, which is termed as the spermatogenesis. This spermatogenesis, from where they are formed? They are formed from the spermatogonia lining. They are lying toward the basement membrane in the seminiferous tubule. Last lecture में हमने देखी थी spermatogonia slide देखी थी. Formation of the sperm from the spermatogonia. The primordial germ cells, they migrate during embryonic life, during fetal life, when testes are developing. The primordial germ cell from in the genital ridge, जहाँ से testes बन रहे हैं, primordial germ cell, they migrate into the seminiferous tubule. So primordial germ cell, they migrate into the seminiferous tubule to line the tubules as they are termed as then spermatogonia. पहले तो उस fetal life में primordial germ cells, फिर they are known as spermatogonia when they are lining the seminiferous tubule. Then these spermatogonia are lining, they are present in the seminiferous tubule throughout the life of the male. Special thing about these spermatogonia है, they can undergo simple cell division, which is termed as mitosis. Cell division, simple cell division takes place in the, that means new spermatogonia can be formed. एक spermatogonia दो बना सकता है, चार बना सकता है आगे, they can proliferate, they can multiply and many more spermatogonia may be formed. Original primordial germ cell ने बना दिए थे, लेकिन they can even now proliferate in the rest of the life as well. तो वहाँ से नए spermatogonia बनते रहते हैं. इस पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ कि अगली बात खोलने के लिए. In female, primordial germ cells in the intrauterine life, they do develop and they then migrate into the deeper part, cortex of the ovary. ओवरी के अंदर जाते हैं सरफेस से, जिस तरह ये they were going to the into the seminiferous tubule. Female में भी primordial germ cells, they migrate into the substance of the ovaries, but those cells, those primordial germ cells, they do not proliferate. So their number is fixed. They are formed during intrauterine life, the primordial germ cells, and they migrate into the ovary and they do not proliferate after formation in the intrauterine life. That's why the gamete formation in female is fixed. They cannot produce more primordial germ cells. They develop during the intrauterine life of the female fetus, and
when the baby is born, female baby is born, that number is fixed. हम उसके female reproductive system में बात करेंगे कितना नंबर होता है, but that is fixed. They do not proliferate. Male में तो proliferation spermatogonia की होती रहती है, and female में primary जो primordial ovum उसको कहते हैं, वो proliferate नहीं करती. जिसका मतलब है कि when they have ovulated or they have degenerated, there is no more possibility of the formation of any female gamete. So that's why in female, reproductive age ends at about 45 years of age, जिसको हम menopause कहते हैं. So this is important. So spermatogonia in male, they can proliferate, and that's why the male are capable of producing children throughout their life. This will be life possible. This is a diagram. This is the basement membrane की तरफ. These are the spermatogonia, and then they are differentiating, and when they lead to the formation of gamete, they will be converted into first primary spermatocyte. आगे हम देखेंगे spermatogonium A और spermatogonium B, then the primary spermatocyte, and they will reduction division will occur, and then the spermatids will be formed, and then finally the sperms will be formed, and so that's how this takes place. From these spermatogonia से बनते हैं. This diagram is another, that is spermatogonia are lining this, and then this is a big cell. This is Sertoli cells, and these cells, different stages of the formation of the sperms or spermatids, they are wrapped by this big cell. Sertoli cell इनको cover करके सारा process हो रहा है, and these sperms are released by the Sertoli cells into the lumen. ल्यूमेन की तरफ रिलीज होते हैं. सो सेमिनोफेस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द spermatogenesis. Spermatogenesis, testes are present at the time of the birth. Testosterone is also produced, उसको हम बाद में देखेंगे. But actual male reproductive life starts near puberty. At about age of 13-14 years पे जब testosterone production starts in young boy, that is at the age of 12, 13, 14 years. So begins near the age of puberty, about 13, average उसकी 13 years है. So mitosis continue for the formation of the spermatogonia. ये पिछली slide में भी बात करते हैं. Spermatogonia, they can proliferate throughout their life, और वो new spermatogonia can be formed. Spermatogonia migrate toward the central lumen. ये proliferate करके central lumen की तरफ जाते रहते हैं. And when they are going to form the sperms, they are and when they are migrating in the lumen, and पिछली diagram में हम देख के आगे, they are covered by that sustentacular cells or Sertoli cells. Diagram में हमने देखा था, उसको cover के साथ they are migrating into the lumen. And when they are going to form the sperm, this spermatogonium enlarges to form a bigger cell which is known as the primary spermatocyte. Diagram में हमने देखा था. दोबारा वापस चला जाता हूँ आपको दिखाने के लिए. इस diagram, this one, that is, this is the primary spermatocyte. हुआ क्या है? अभी कुछ नहीं हुआ. ये spermatogonium का size बड़ा हो गया है. Now अब ये it will go the reduction division. Mitosis नहीं होगी इसमें. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन जाएगा तो माइटोसिस नहीं होगी, मियोसिस होगी. रिडक्शन डिवीजन, 2 स्टेज डिवीजन जिसको हम समझते हैं. तो मियोसिस विल स्टार्ट. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा. तो ये जो हमने कहा, सो दिस enlarges to form the primary spermatocyte. ये primary spermatocyte में reduction division, 2 stage reduction division जिसको हम meiosis कहते हैं, that will start. अब उसकी stages हम देख लेते हैं. तो primary spermatocytes में 2 division होंगी. First division, primary spermatocytes जिसमें 23 pairs of the chromosomes मौजूद हैं, that is 46 chromosome, somatic cells की तरह. There is the diploid number of chromosome, paired chromosome, 23 pairs of the chromosome, 46 chromosomes are present. Now this first division will take place and 2 cells will be formed. This division is such that
23 chromosomes will come into one cell and the 23, so they will become unpaired, haploid हो जाते हैं. Diploid number, इस primary spermatocyte से जो दो सेल बनेंगे, which are then known as the secondary spermatocyte, वो जो दो सेल बनेंगे उनमें 23 paired chromosome नहीं होंगे, 46 chromosome नहीं होंगे, diploid number of chromosomes नहीं होंगे, haploid number of chromosome will result because of this first reduction division. So haploid number of chromosome 23 chromosome in secondary spermatocytes में होगा. This secondary spermatocyte then will divide. और उसमें जब डिवाइड होगा, each secondary spermatocyte that will haploid number है उसमें 23 chromosome that will divide into two cells which are known as spermatids. उसमें भी haploid number है. So each primary spermatocyte divides into four cells. 4 सेल बनते हैं. पहली डिवीजन में हैप्लॉइड नंबर हो जाते हैं, वो फिर हैप्लॉइड नंबर में रेप्लिका जुदा होके दो अलग अलग सेल में जाते हैं, स्पर्मेटिड्स में जाता है. तो ये रिडक्शन डिवीजन आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी, उसी की वो है रिवीजन हम कर रहे हैं. सो फ्रॉम ईच स्पर्मेटोसाइट, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे. ऑल दोज 4 स्पर्मेटिड्स विल बी हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओनली 23 क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. ईच स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्म. ये जो स्पर्मेटिड बने हैं, 4 जो बने हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये all of them may be converted into sperm. Spermiogenesis. Next stage is ये spermatid बनने के बाद इनकी शेप जो sperm वाली बनी है, having head and body and tail etc. आगे हम देखेंगे shape of the sperm, हम उसको देखेंगे. तो this spermiogenesis, all these, so one primary spermatocyte से 4 sperms बन सकते हैं. Now important thing about this, out of these 23 pairs of the chromosomes, 23rd pair is known as sex pair. Female में this sex pair of chromosome comprises of 2 chromosomes. One is known as X chromosome, one is known as Y chromosome. When first reduction division occurs, when the haploid number occurs, 2 secondary spermatocytes are formed. One will be having X chromosome, the other one will be having Y chromosomes only. And when this one divides, it divides into 2 spermatids having Y chromosome, and the other secondary spermatocyte will divide into 2 spermatids. Both of them will be having X chromosome. So here, that is half of the sperm contain X chromosome and half of the spermatids are sperm, they contain Y chromosomes. Here you can imagine, that is, male gamete is responsible for the determination of the sex of the baby. जो बेबी का सेक्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पर्म. फीमेल में तो होते ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, एंड फीमेल में तो ओवम में होता ही एक्स क्रोमोसोम है. So half of the population of the sperm and semen contains X chromosome and half of the population contains Y chromosome. If Y chromosome containing sperm fertilizes the ovum, then the male baby will result, and if X chromosome containing chromosome reaches the ovum first and it fertilizes, then the female baby will result. There is no role of female in the formation of the male child or female child. ये सिर्फ बाप का काम है. So half of the sperms contain X chromosome and half of the sperm contain Y chromosome. This is that is diagrammatic. That a primordial germ cell, this can proliferate. This is spermatogonia. This can proliferate. Spermatogonia ही बने हैं, ये बन गए. Now when they are converted into big cell, primary spermatocytes, then this divides into haploid number containing the secondary spermatocytes, and this will divide into the 4 spermatids, and then they will be converted into sperms. Its timings भी लिखे होंगे, 9 days, and then they are converted into spermatids in 19 days, and then they are converted into sperms in 21 days. काफी टाइम लगता है, you can 1 महीना लग रहा है for the proper formation of the sperms. This is again the same, that is the स्पर्मेटोजेनेसिस, ये माइटोसिस अभी हो रही है, दे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है, तो देन रेप्लिकेशन स्टार्ट्स देयर, बट
separation in the replica and the original does not occur. That occurs here when they are spermatids are formed. So replica, so these are the secondary spermatocytes and these are the spermatids and these are the sperms. Spermiogenesis. Formation of the sperm. ये spermatids is an epithelioid cells. हमने डायग्राम में देख लिया, ये तो इस किस्म के सेल्स हैं. ये these are not sperms. Spermatids epithelioid cells हैं. They have to be converted into sperm. They all these cells are covered by the Sertoli cells. वो sustentacular cell जो bigger cell हमने कहा हुआ है, it is covering all these cells. वो बड़ा सा cell है, उसकी cell membrane ने इनको सबको cover किया हुआ है. All this is happening in that cover. उस कवर के साथ हो रहा है. So these spermatids will be converted. So spermatids are epithelioid cells. They have to be converted into that shape. वो जो डायग्राम के that shape, उसका head, body and tail बनाना है इस cell को. So the modified and differentiated to form sperm, and this is known as spermiogenesis. Spermatogenesis तो और प्रोसेस है ना, ये डिवीजन भी उसका शामिल है और फिर स्पर्म का बनना, सारा प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये स्पर्मेटिड्स का कन्वर्शन इनटू दैट शेप, दैट फिजियोलॉजिकल शेप ऑफ दैट सेल. दिस इज वन सेल. व्हाट इज स्पर्म? दिस इज वन सेल, मॉडिफाइड सेल. उसकी शेप चेंज कर दिया है तो एक सेल ही ना. सो दे मॉडिफाइड आर डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द स्पर्म्स. इसमें होता क्या है? हेड इज फॉर्म, न्यूक्लियर मटेरियल इज कंडेंस्ड टू फॉर्म द हेड. हेड में वो 23 क्रोमोसोम्स कंडेंस होके हेड बनाते हैं. उसके आगे जो लगा होता है दैट इज एक्रोसोम. वो गाल्जी कम्प्लेक्स से बनता है. एक्रोसोम दे फॉर्म द गाल्जी कम्प्लेक्स. वो उस हेड के वो ज़्यादा पिंक जो दिखाई दे रहा है दैट इज एक्रोसोम. वो किससे बनता है? गाल्जी कम्प्लेक्स से बनता है. एंड that Golgi complex, that acrosome contains the enzymes hyaluronidase and proteolytic enzyme. We will see in the acrosomal reaction that is this Golgi complex, this acrosome, they are responsible for the dispersal of any material in front of these sperms. They digest the material when they reach the ovum in the female genital tract. वहाँ पे जब पहुँचते हैं, ovum is surrounded by multiple layers of the cells. Corona radiata probably उनको कहते हैं. उनको सबको digest करके disperse करके sperm has to reach the zona pellucida और ovum को पहुँचना चाहिए. So all these enzymes in the Golgi complex, इतने multiple number of the sperm तो बहुत ज़्यादा millions में होते हैं, आगे हम देखेंगे. All these are required for the proper digestion and final that is one sperm will reach there and it will fertilize the ovum by the help of these hyaluronidases and proteolytic enzyme. All the material is dispersed or removed in front of the sperm. So tail, whole of this is tail. This is the body of the tail and rest is the end piece of the tail. उसको हम कहते हैं. It is as a flagellum. जिस तरह फ्लैजिलेटा में फ्लैजिलम होती है कंटेनिंग दी 11 माइक्रोट्यूब्यूल. ये आपके गाइटन के शुरू के पहले चैप्टर में भी ये डिस्कस हुआ है कि ये फ्लैजिल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला. तो ये 11 माइक्रोट्यूब्यूल का सेंट्रल एक्सोनीम होता है और उसकी 11 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं. एंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज माइक्रोट्यूब्यूल काजेज दी अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ दिस टेल ऑफ द स्पर्म एंड दिस इज उसको स्विम करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए हेल्प करती है. सो सेल मेम्ब्रेन कवर्स ऑल दिस. अब सेल मेम्ब्रेन हेड को भी, आगे एक्रोसोम को भी, बॉडी को भी, टेल को, पूरे को इसको कवर किया हुआ है. दी माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं वो थिक पार्ट जो है जिसको बॉडी ऑफ द टेल कहते हैं, बॉडी में जमा होता है माइटोकॉन्ड्रिया आर कलेक्टेड इन द प्रॉक्सिमल थिक पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द टेल. बॉडी ऑफ द टेल में वो जमा होते हैं. दैट इज हाउ स्पर्मियोजेनेसिस टेक्स प्लेस. Conversion of that epithelioid cells into this shape of the sperm. हेड, फिर रिपीट कर देता हूँ, हेड में न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस होता है. एक्रोसोम वो इसलिए कि डाइजेशन के लिए ये न्यूक्लियर मटेरियल को, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दिस न्यूक्लियर मटेरियल, दीज क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द ओवम, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो बॉडी, टेल एंड फ्लैजेलर मूवमेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सारे हेल्प के लिए फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द स्पर्म.
Now spermiogenesis, that is again the same जो हमने describe कर दिया, that is the spermatid nucleus is being condensed and this flagellum is being formed, cytoplasm is gradually disappearing and this shape is forming and mitochondria are collected here and this tail is being formed and finally this shape, that is this contains the nucleus, acrosomes in front and then the mitochondria and the thick portion and then this tail is there. So that is the shape of the sperm. This process is known as spermiogenesis. ये वो जो डायग्राम पहली वाली डायग्राम मैंने बताई थी. एक्रोसोम सर उसके मेम्ब्रेन है, वैक्यूल भी हो सकते हैं, बट कंडेंस दिस न्यूक्लियर मटेरियल हेड का पार्ट है. दिस इज नोन एज नेक, बॉडी एंड देन टेल, चीफ पीस और एंड पीस ऑफ द टेल, ये तो नाम है उसके. तो स्पर्म की ये शेप बन जाती है. For the spermiogenesis, for the formation of this all spermatogenesis as well as the spermiogenesis, there are several hormones required. Luteinizing hormone, हम देखेंगे, luteinizing hormone is must for the formation of testosterone. Without testosterone, this will not happen. So luteinizing hormone is, and then the follicle stimulating hormone, it controls the function of the Sertoli cells. जो सर्टोली सेल जो इसको काम कर रहे हैं. FSH is also required. Testosterone itself ये प्रोड्यूस करती है. Testosterone produced from the interstitial cells of latex testis से ये भी चाहिए. Then estrogen, some female hormone as well, ये भी it is produced from the testis as well. एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी पैदा होती है, हम एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस किया था. तो ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन एज वेल. देन द ग्रोथ हार्मोन, जनरल हार्मोन, इट इज आल्सो इन्वॉल्व. मे बी थायरोक्सिन इज आल्सो इन्वॉल्व. हमने थायरोक्सिन के फंक्शन में पढ़ा था. एनी abnormality of the thyroxine may result into abnormal reproductive functions as well. So many hormones are involved for the proper control of all this process of spermatogenesis or sperm formation. Now this important maturation of the sperm, ये जो हमने spermiogenesis, ये पिछली स्लाइड में हमने यहाँ तक देखा था, the formation of this shape, this was spermiogenesis. This morphologically the sperm is fully mature sperm, but physiologically it is not mature. When it will mature, this sperm originally when it is formed, freshly formed sperms in the seminiferous tubule, ये सर्टोलाई सेल्स के अंदर बन रहे हैं, seminiferous tubule में बन रहे हैं, ये बन चुके हैं. they will be transferred into the lumen and they will be transferred into the epididymis. ये freshly formed sperms है. they are non-motile. They do not exhibit flagellar movement. इनकी टेल ऐसे ऐसे undulating movement नहीं करती, flagellar movement show नहीं करती. And if sperm is non-motile, it is infertile. अगर जो भी sperm non-motile होगा, infertile होगा. आप देखेंगे आगे क्लिनिकल क्लासेस में बहुत से लोग मेल आपके पास होंगे जिनके बच्चे इनफर्टिलिटी केसेस आएंगे. उनका स्पर्म काउंट करेंगे, मे बी स्पर्म काउंट इज ऑलराइट, बट मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर नॉन-मोटाइल. मोटिलिटी ना हो तो स्पर्म्स आर इनफर्टाइल. So they are non-motile, freshly formed seminiferous tubule में ये spermiogenesis जब हो गया, they do not have the ability to move. Their flagellar movement नहीं हो सकती. So if they are non-motile, so hence they are non-fertile. वो fertile भी नहीं है. They develop this motility and then fertility. दोनों motility होगी तो fertility होगी. They develop when they are stored in the epididymis. वो जो दूसरी ट्यूब है जिसका हेड बॉडी टेल हमने डायग्राम में देखा था फिजियोलॉजी प्रीवियस लेक्चर में. तो फॉर 18 to 24 आवर्स जब एपिडिडमस में रहते हैं, देन दे गेन दिस एबिलिटी. दिस प्रोसेस इज नोन एज मैच्योरेशन. कि दे गेन दी एबिलिटी टू अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द और मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी उसमें गेन करते हैं. तो दे डू नॉट एग्जिबिट मोटिलिटी बिफोर इजैकुलेशन. ये बात दुरुस्त है. एपिडिडमस में भी 24 आवर्स तक रहने के बावजूद फ्रेशली फॉर्म तो हैं, वो तो मोटाइल हो ही नहीं सकते. एपिडिडमस में दे गेन मोटिलिटी लेकिन दे डोंट एग्जिबिट मोटिलिटी. मोटिलिटी शुरू नहीं कर देते. वो मोटिलिटी शुरू करेंगे ओनली आफ्टर इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन के बाद मोटिलिटी. तो दे डोंट एग्जिबिट मोटिलिटी बिफोर इजैकुलेशन. स्टोरेज ऑफ द स्पर्म इन द एपिडिडमस, एपिडिडमस में भी स्टोर रहते हैं और मैच्योर भी होते हैं, मैच्योरेशन भी होती है. और देन दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द वास डेफरेंस. वास डेफरेंस में भी ज़्यादातर स्टोर हाउस उसका वास डेफरेंस है. वो आपने देखा होगा लंबी सी डायलेटेड ट्यूब्यूल है, स्पेशली इन द एम्पुला ऑफ द वास डेफरेंस जो डायलेटेड पार्ट है बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोस्टेट. इसमें ऑल दी स्पर्म्स आर स्टोर्ड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम. और कितना क्वाइट लॉन्ग टाइम? फॉर इवन मंथ्स.
they can remain fertile in this male genital tract in the vas deferens and epididymis even after 1 month. 1 महीने तक भी अगर वो वहाँ रहें, they are capable of fertility, they are fertile. So they are kept inactive during stage. This storage में they don't exhibit motility, लेकिन inactive होते हैं, लेकिन the ejaculation के बाद they become active. So they become motile after ejaculation. Active उनकी शो होती. So this is the maturation of the sperm. They gain the motility in the epididymis. Physiology of the mature sperm जब वो बन गया है तो उसकी physiology of mature capable of flagellated movement. ये mature हो गया, that undulating movement of that tail, flagellated movement उसको कहते हैं. It is capable of that movement और इसकी velocity जो है 1 to 4 millimeter per minute. ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 to 4 millimeter इनकी फ्लैजिलर मूवमेंट से जो मोटिलिटी है, ये स्विम करते हैं. क्या वेलोसिटी है? ओनली 1 to 4 millimeter per minute. And you must be knowing that the sperm have to travel in from the female vagina into the cavity of the uterus, into the fallopian tube, toward the end of the fallopian tube, ovarian end of the fallopian tube. ये इतना लंबा रास्ता इन्होंने तय करके फर्टिलाइजेशन करनी है. Fertilization takes place in the ovarian end of the fallopian tube, female, and they are deposited in the vagina. They are deposited in the vagina. They pass through the cervix. सर्विक्स से गुजर कर जाएंगे, यूट्रस की सर्विक्स से, थ्रू द कैविटी, द कैविटी ऑफ द यूट्रस से गुजर कर जाएंगे. दे विल एंटर इनटू द फलोपियन ट्यूब, क्वाइट लॉन्ग ट्यूब है, उसको ट्रेवल करके दे हैव टू रीच देयर. और ये मोटिलिटी उनकी इतनी है, वी विल सी उसकी फर्टिलाइजेशन होती कैसे है. दे कैन रीच देयर विद इन अ फ्यू मिनट्स. अ फ्यू मिनट्स में इतना लंबा रास्ता कैसे तय करते हैं. और भी फैक्टर्स हैं फॉर देयर प्रोपगेशन टुवर्ड दी दैट इज द ओवेरियन एंड ऑफ द फलोपियन ट्यूब. उनकी अपनी वेलोसिटी फ्लैजिलर मूवमेंट से 1 to 4 millimeter per minute है. देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड व्हेन दे आर पुट इनटू स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम. जब वो वास डेफरेंस में पड़े हैं या एपिडिडमिस में पड़े हैं, यहाँ पे एसिडिटी है. एसिडिटी की वजह से दे डोंट एग्जिबिट द फ्लैजिलर मूवमेंट. उनको जब न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे या एल्कलाइन मीडियम में डालेंगे, ओनली दे विल एग्जिबिट. सो देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम. स्टोर में तो वो एसिडिक मीडियम है, वो मोटिलिटी शो ही नहीं कर सकते. लेकिन एल्कलाइन मीडियम में अल्कलिनिटी कब होगी? इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सीमन. सीमन में ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जब ऐड होगी, दैट इज एल्कलाइन. वो एल्कलिनिटी पैदा करेगी, फिर मोटिलिटी इनकी शो होगी. सो देयर एक्टिविटी इज मोर इन द न्यूट्रल मीडियम और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम. देयर मोटिलिटी इज रिड्यूस्ड इन एसिडिक मीडियम, एंड दैट इज द केस व्हेन दे आर स्टोर्ड इन द वास डेफरेंस इन द एपिडिडमिस. एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है. लाइफ स्पैन कितना होता है? आफ्टर इजैकुलेशन, लाइफ स्पैन आफ्टर इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म इज 24 to 48 आवर्स. 1 दिन या 2 दिन, 24 to 48 आवर्स. इसके दौरान इट हैज़ टू रीच द स्पर्म ओवम. इस दौरान में मिलेगा तो देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. अगर इतने इससे ज़्यादा टाइम गुजर गया इन स्पर्म पर और ओवम तब आया है, देन दे विल नॉट बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग दी, दे विल बिकम इनफर्टाइल. सो इनकी लाइफ स्पैन फर्टिलिटी पीरियड 24 to 48 आवर्स. So that is how the spermatogenesis takes place. अब इसको आगे मोर डिटेल रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो हमने प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिकल वेसिकल एटसेट्रा हमने देखे हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का क्या है, मेन सीमन में उनका रोल क्या है, वो क्यों अल्लाह ने बाग ने बनाए, वो क्या काम करते हैं. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर दैट इज फंक्शन ऑफ द एक्सेसरी मेल ग्लैंड जो हमने प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और अ फ्यू अबाउट थिंग्स अबाउट the semen etc. we will discuss in next video inshallah ta'ala, and hope to you are following me. If you have got some queries, some questions, you can ask in the comment section or I'll answer. And please do share this
वीडियो टू रेस्ट ऑफ दी मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इसको सब्सक्राइब भी करें, लोगों को फैलाएं भी, सदका जारिया आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। और इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।